दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है वेंकटेश। स्वागत है आपका फार्मा ज्ञान में। इस वीडियो में हम म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स के बारे में कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला एमसीक्यू, mechanisms of transmucosal drug permeation are: option A transcellular and paracellular, option B transcellular and lipoidal, option C paracellular and aqueous pore pathway, and the answer is option A transcellular and paracellular. Transcellular means through the cells and paracellular means in between the cells, means through aqueous pore pathway. एंड ट्रांससेल्युलर को ही लिपोइडल कहते हैं दोस्तों, और पैरासेल्युलर को ही एक्वियस पोर पाथवे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सम बकल डोसेज फॉर्म कंटेन्स impermeable backing to control the direction of drug delivery, to prevent drug loss, to reduce disintegration. Option D, all of the above. And answer is option D, all of the above. Next question, outermost layer of oral mucosa is: option A stratum corneum, option B lamina propria, option C stratified squamous epithelium, option D submucosa. And answer is option C stratified squamous epithelium. Next question is, for a linear polymer, higher the molecular weight dash dash the mucoadhesiveness, lower, higher, equal, or can't say. And the answer is option B, higher. Higher the molecular weight, higher is the mucoadhesiveness. Next question, for mucoadhesion to occur, hydrogen bonding capacity of the polymer should be: option A low, option B negligible, option C high, option D can't say. And the answer is option C, high. क्या क्या होता है दोस्तों, म्यूको एडेजन होने के लिए पॉलीमर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैपेसिटी हाई होनी चाहिए। मतलब उसमें ऐसे फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द वाटर इनसोल्यूबल पॉलीमर। ऑप्शन ए CMC, ऑप्शन बी PVP, ऑप्शन सी कार्बोपोल, ऑप्शन डी PVA. And the answer is option C कार्बोपोल. Next question, select the water soluble polymer. Option A PEG, option C polyacrylic acid, option C HPMC, option D carbopol. And the answer is option C HPMC is water soluble polymer. Next question, carbopol is dash dash and dash dash polymer. Option A anionic and water soluble, option B cationic and water insoluble, option C neutral and water insoluble, and option D anionic and water insoluble. And the answer is option D, carbopol is anionic and water insoluble polymer. Next question, chitosan is dash dash polymer. Option A anionic, option B cationic, option C neutral, and option D can't say. And the answer is option B cationic. Chitosan is cationic polymer. Next question, which of the following drugs can be administered with mucosal drug delivery system? Option A codeine, option B nitroglycerin, option C insulin, option D all of the above. And the answer is all of the above. Next question, nitroglycerin is used to treat: option A angina, option B asthma, option C arrhythmia, and option D none of these. The answer is option A angina. Nitroglycerin is used to treat angina. Next question, texture profile analysis is done for measuring properties like: option A texture, option B tensile strength, option C hardness, brittleness, breathability, and option D both B and C. And the answer is option D both B and C. टेक्सचर प्रोफाइल एनालिसिस जो होता है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ और हार्डनेस, ब्रिटलनेस, ब्रेडेबिलिटी ऐसे प्रॉपर्टीज को मेजर करने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, according to the weighting theory of mucoadhesion, the contact angle should be equal to or close to: option A 30 degree, option B 45 degree, option C 90 degree, and option D 0 degree. And the answer is option D 0 degree.
तो क्या है, वो वेटिंग थ्योरी है जो म्यूकोएडेजन की, उसके हिसाब से कॉन्टैक्ट एंगल शुड बी इक्वल टू और क्लोज टू 0 डिग्री. नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द न्यूट्रल पॉलीमर. ऑप्शन ए चिटोसन, ऑप्शन बी CMC, ऑप्शन सी कार्बोपॉल and option D Udrazit analogs, and the answer is option D Udrazit analogs. Next question, identify the penetration enhancer. Option A sodium glycolate, option B polysorbate 80, option C sodium EDTA, and option D all of the above, and answer is option D all of the above. ये सारे जो है वो penetration enhancer है. Next question, if the initial contact time decreases then mucoadhesive strength. Option A increases, option B decreases, option C remains same, and option D can't say. And the answer is option B decreases. If the initial contact time decreases, then mucoadhesive strength decreases. Next question, for Nicorette gum, the main target for drug absorption is option A sublingual mucosa, option B stratum corneum, option C alveoli, and option D none of these. And the answer is option A sublingual mucosa. मतलब जो निकोरेट गम होता है उसका ड्रग एब्सॉर्प्शन का मेन टारगेट जो होता है वो सबलिंगुअल म्यूकोसा में. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फ्लोरोसेंट प्रोब मेथड लेबलिंग इज डन बाय ऑप्शन ए pyrimidine and isothiocyanate, option B proline and fluorosin isothiocyanate, option C pyrene and fluorosin isothiocyanate, and option D pyridine and fluorosin methyl isocyanate. And the answer is option C pyrene and fluorosin isothiocyanate. Next question, as the adhesion strength increases, adhesion number increases. मतलब क्या होता है, जब adhesion strength increase होता है तब adhesion number भी increase ही होगा. Next question, in the presence of adhesive the electrical conductance is option A high, option B low, option C same, option D none of these. And the answer is option B, in the presence of adhesive the electrical conductance is low. Next question, correct formula for swelling index is, answer is option C, swelling index is equal to W2 minus W1 divided by W1. Next question, when mucin gold conjugate interact with bioadhesive hydrogel develops dash dash color on surface, option A red, option B blue, option C violet, and option D purple. The answer is option A red. Next question, if the cross-linking density of polymer is high then penetration of the polymer is, answer is low. मतलब क्रॉस लिंकिंग डेंसिटी अगर हाई होगी पॉलीमर की तब penetration of the polymer is low. Next question, consider two linear polymers X and Y with molecular weight 2400 and 5000 respectively. Which polymer has higher mucoadhesiveness? Option A X, option B Y, option C both have same, and option D can't say. And the answer is option B Y. मतलब हमें पता है कि जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा उसका म्यूकोएडहेसिवनेस भी ज्यादा होगा उस पॉलीमर का, इसीलिए ऑप्शन बी वाई पॉलीमर. नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लिसरील नाइट्रेट स्प्रे इज यूज्ड टू ट्रीट, ऑप्शन ए एंजाइना, ऑप्शन बी अरिथमिया, ऑप्शन सी अस्थमा, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. द आंसर इज ऑप्शन ए, ग्लिसरील नाइट्रेट स्प्रे इज यूज्ड टू ट्रीट एंजाइना. तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कर देना. अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना. तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.